Assalamu alaikum and a very warm welcome to everybody present here and all of our viewers. My name is Waleed Aziz and today we are currently present with the current and active Assistant Commissioner of Sialkot, Mr. Mohammad Murtaza. And we're going to talk about artificial inflation and we're going to ask him a few questions and have a brief discussion over it. Sir, सबसे पहला सवाल मेरा है कि is there anything like artificial inflation and how has the government intervened? Thank you for having me here. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first question is that does artificial inflation even exist? And that's a very complicated question because you can't differentiate if it's artificially inflated or if it's really inflated. When you have petrol prices that are doubling, when you have international pressures, when you have the rupees devaluing, so consequently there is going to be inflation. I mean, as an economics student, it's your natural course of action. Inflation is always present, but in Pakistan it has always been there. And with all these international pressures and local pressures, inflation becomes necessary to some degree, and it's a necessary consequence. Artificial inflation is when inflation happens solely because there is no control on things like profiteering, on hoarding, on abnormal profits. This again is very tricky it's tricky to differentiate कि अब जो पेट्रोल की हो रही है इन्फ्लेशन क्या वो आर्टिफिशियल है या असली है. तो वो असली इन्फ्लेशन है बिकॉज वो ग्लोबली डिटर्मिन हो रही है. पर अगर टमाटर की कीमत कल 80 रुपये किलो थी और आज 150 रुपये किलो है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन किस टाइप की है. अब अगर तो पीछे से सप्लाई नहीं आ रही तो वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन नहीं है, वो रियल इन्फ्लेशन है. अगर उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, वो भी रियल इन्फ्लेशन है. आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन तब होती है अगर सुबह सब्ज़ी मंडी के अंदर उसकी ऑक्शन करते हुए वो लोग 800 रुपये का अगर देने की ज़रूरत है एक पेटी, तो वो उसको 2000 से शुरू करें ऑक्शन और लोगों को लगे कि शायद टमाटर की प्राइस ही ये होती है, तो वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होती है. गवर्नमेंट क्या करती है इसके अंदर? गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस. आई गिव यू अ फ्यू ऑफ दोज. सबसे पहली लिस्ट में जब मंडी के अंदर कोई भी आइटम आती है, मंडी इज़ बेसिकली हम उर्दू में से मंडी कहते हैं, अंग्रेज़ी में आप उसे मार्केट प्लेस बोलेंगे. एंड देयर इज़ वन बिग मार्केट प्लेस फॉर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़. एक ऑयल की मार्केट होती है, एक सब्ज़ी की मार्केट होती है, एक फ्रूट की मार्केट होती है. सुबह सुबह फजर के बाद फ्रूट और सब्ज़ी मंडी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जितना फ्रूट और सब्ज़ी आप शहर में पूरा दिन देखते हो वो उधर आता है. वहाँ से उसको फिर स्मॉल डीलर्स, रिटेलर्स, व्यापारी वो लेके जाते हैं. वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जिसको छुपाया जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जिसका प्राइस आर्टिफिशियली गलत बताई जा रही है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जिसके पैकेट के ऊपर, खाने के अगर घी की बात करो, उस पर प्राइस कोई और लिखी हुई है, किसी ने उस पर मार्कर से उसको मिटाकर तो कोई और प्राइस लिखती हो. दीज आर अनफेयर प्रैक्टिसेस. इनको गवर्नमेंट चेक भी करती है. वी करंटली हैव इन सियालकोट फॉर एवरी पुलिस स्टेशन वी हैव अ प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट. एंड द मैजिस्ट्रेट सोल जॉब इज़ कि अगर उस एरिया के अंदर कोई भी चीज़ रेट लिस्ट गवर्नमेंट एक निकालती है सुबह, उस रेट लिस्ट से खिलाफ है तो उसके ऊपर आप उसे फ़ाइन कर दें. अभी आप लोग बल्कि इधर बैठे हुए थे तो आपने भी देखा कि मेरी कोर्ट के अंदर आज तकरीबन 8 से 10 केसेस आए हैं जिसमें किसी ने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई थी, किसी ने दूध में अडल्ट्रेशन अगर की है. अब ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन होगी ना कि आप 1 लीटर दूध अगर 80 रुपये का है तो आप उसके अंदर पानी डाल के तो आप उसको उसकी प्राइस फिर भी 80 चार्ज कर रहे हो. सो ये डिफरेंट इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, इनकी हमारे पास लिस्ट है. उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन करते हैं, FIRs करते हैं, फाइन्स करते हैं, प्रिजन सेंटेंस देते हैं लोगों को और कोशिश करते हैं कि उसको कर्टेल किया जा सके. So my next question. Tell me how much time we have for every answer so that He answered my question about how the government punishes these culprits. Lekin I'm going to ask you to brief it out again for me. How does the government punish, or what is the punishment system that they follow? So your question was how has the government intervened? What is the punishment system of the government? ठीक है. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The government deals with artificial inflation on 3 fronts. On the first front, we have, just give me a second. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The government deals with artificial inflation on 3 fronts. The first one is reporting. It needs to come into our notice and warnings need to be given.
For that, we have price control magistrates, we have a price control helpline, we have the deputy commissioner's office, the assistant commissioner's office, the district officer of industries ka office. We have various offices where these can be reported. And if nowhere else, then you can just go to the nearest police station and report it. तो रिपोर्टिंग होगी तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. सबसे पहले तो हम ये करते हैं, आइडेंटिफाई हो गया है, मैटर ट्रिवियल है या फर्स्ट ऑफेंस है, तो हम उसके ऊपर वार्निंग देते हैं, या अगर नई गवर्नमेंट पॉलिसी है तो उसके ऊपर हम वार्निंग देते हैं. अगर रिपीट ऑफेंस है या पुरानी पॉलिसी है और फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो उसके ऊपर हम उनको फाइन कर देते हैं. एंड द फाइन कैन रेंज फ्रॉम एनी वेयर बिटवीन 1000 रुपीज़ टू 100,000 रुपीज़. अगर फाइन से भी हमें लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रही सिचुएशन, तो फिर हम उनको प्रिजन सेंटेंस देते हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे एज असिस्टेंट कमिश्नर और हमारे दीगर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को ये इख्तियार दिया है कि हम मौके पे खड़े खड़े उस बंदे को 3 महीने तक जेल भेज सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सज़ा है फॉर समथिंग रिलेटेड टू अ प्राइस ऑफेंस. इसके अलावा अगर होर्डिंग कर रहा है कोई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, उस केस में जितना माल ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसने की हुई है, ऑल होर्डेड मटीरियल इज़ कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, and no money from that hoarded material is given to that person if he is guilty of hoarding. Especially in essential commodities, there is a government regulation. There is a Price Control and Profiteering Act 1977. Then there is a Prevention of Hoarding Act 2020, and then there is a Prevention of Speculation in Essential Commodities Act 2021. Now this last act is very appropriate for the question that you've asked. Prevention of क्या है, हाँ, इन एसेंशियल कमोडिटीज़. सो जो लोग एक इस उम्मीद पे चीज़ें जमा कर लेते हैं कि आगे जाके महंगी होंगी तो हम बेचेंगे, ये सिर्फ उनके लिए है. और इसमें कानून इतना सख्त है कि मौके के ऊपर खड़े खड़े आप उनका सारा सामान जब्त कर सकते हो, और आप उनको ना सिर्फ ये कि उस सामान को जब्त करके उसका कोई पैसे नहीं देंगे, बल्कि 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट होर्डेड आइटम वो भी आप उनको चार्ज कर देते हो. तो मैंने होर्डिंग वीट के ऊपर ये किया कि वीट को गवर्नमेंट का रेट था इस बार 1800 रुपये फॉर एग्जांपल, तो लोग इस उम्मीद पे कि ये 2400 पे जाएगी, 2500 पे जाएगी, वो उसको होल्ड कर रहे थे. हमने उसके ऊपर जिन लोगों की होर्डिंग पकड़ी, उनका हमने सारे बैग्स ऑफ वीट भी कॉन्फिस्केट कर लिए, और 50% ऑफ द ऑफिशियल रेट ऑफ दैट स्टॉक हमने उनको एज फाइन भी इम्पोज किया, इन एडिशन टू 1 week इन प्रिजन. So that's what the government is doing. Your next question is that what causes artificial inflation in Pakistan, corruption or mismanagement? So this is a leading question. You're giving me only 2 options. Either it's corruption or it's mismanagement. I would say my opinion is that artificial inflation in Pakistan currently is very low. There are so many checks and balances, and there are so many. Everybody has a right to profit. I can't expect somebody to buy something from the mandi for 100 rupees and sell it for 98. That cannot happen. So if tomato, which is an essential commodity, right? If tomato is starting in Mansehra, then the farmer in Mansehra is going to keep his money. Then it's going to be transported all the way to Gujranwala. That transporter is going to keep his money. In Gujranwala, the vendor is going to offload it. The mazdoor who offloads it is going to keep his money. Then he's going to sell it to another smaller supplier. That supplier is going to keep his money. Then that supplier has to transport it to Sialkot. He has to keep his money. हर stage पे जब वो item एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखी जाती है, तो वो मजदूर जो है वो उसकी मजदूरी भी लेता है. अगर वो एक बोरी पे 1 रुपया भी ना ले, तो ये उसके साथ कितनी ज्यादती है. और अगर वो एक बोरी पे 1 रुपया लेता है, तो वो 1 रुपया कॉस्ट के ऊपर ऐड कर जाता है. फिर जब सब्जी मंडी सियालकोट के अंदर वो टमाटर, मैं पूरा चेन आपको समझा रहा था कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें. सब्जी मंडी सियालकोट के अंदर बंदा उसको लेकर टमाटर को अपनी रेडी पे डालता है, रेडी पे डाल के निकल के पहुंचता है कैंट के अंदर. अब रास्ता उसने जो क्रॉस किया उसकी भी वो चार्जेस डालेगा उसके ऊपर. फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मैं अगर आज 10 किलो टमाटर मंडी से ख़रीदता हूँ और गर्मी सख्त है और बारिश हो जाती है, 5 किलो टमाटर मेरा ज़ाया हो जाता है. Now who factors in for that 5 kilos of टमाटर की कॉस्ट? सो आई बॉट, अब मैं ये कह सकता हूँ जी मंडी से आपने 10 किलो टमाटर लिया है फॉर 1000 रुपये मिसाल के तौर पे, पर अब 5 किलो टमाटर उसमें से गल गया, सड़ गया, ज़ाया हो गया. कस्टमर आता है,
आपने देखा होगा घरों में जब ख़वातीन सब्ज़ी लेने जाती हैं, अगर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से डाले तो लड़ पड़ती हैं, उससे कहती हैं हम खुद डालेंगे। अब वो जब सब्ज़ी अपनी पसंद की डालेगा, 10 किलो टमाटर में से 5 किलो टमाटर ज़ाया हो गया है, उस 5 किलो टमाटर का जो 500 रुपया है वो भी इसी में से कटना है ना। अब ये सारी कॉस्ट जब आप फैक्टर इन करते हो तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है। जिस दिन बारिश होगी उस दिन सब्ज़ी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, सब्ज़ी का नुकसान होता है। सो हमें इस सारे एंगल से चीज़ को देखना होता है। जब इस सारे एंगल से देखते हो तो मेरा ये मानना है कि लेजिटिमेट इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, नेचुरल इन्फ्लेशन है, इट्स वेरी हाई दीज डेज। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंट्रोल इट by managing the supply chain and also by managing the demand. However, artificial inflation is I would believe very low, if not non-existent in Pakistan. So it's neither corruption nor mismanagement. It's an economic reality. Your next question is that regionally our inflation is almost double than Bangladesh and India and many times higher than China. So why is what are my views about it? China is not a free market. China is a controlled state, and China produces a lot of what it consumes. We don't have the same system here in Pakistan. India also has a lot of checks and balances on the export of food items, for example. Bangladesh probably does the similar thing. I'm not aware of the situation in Bangladesh. In Pakistan, we have a free market system in which we also export food items when there's a surplus, and we import it when we have a shortage. Inflation in Pakistan is high because we are dependent on other countries for a lot of our necessities. Our petrol is imported. Our food supplies are sometimes coming from Afghanistan and Iran. Both Afghanistan and Iran have higher rates of food inflation at times compared to Pakistan. Especially if you consider Afghanistan. Afghanistan has a considerably higher inflation rate than Pakistan when it comes to essential commodities. So we have a different situation to these places. Also, our production has not increased at par with other countries. So tiny Netherlands produces more dairy than Pakistan, which is surprising, but they have advanced their technology, which makes them capable of growing considerably more vegetables and fruits and dairy products in a smaller piece of land. पाकिस्तान में जब तक हमारे पास 2 एकड़ रकबा नहीं होता तब तक हम डेयरी का जो है वो काम नहीं कंसिडर करते हैं। तो भाई 1 मिनट देते हैं इसमें। तो हमारे पास लोकल प्रोड्यूस जो है दैट इज़ वेरी लिमिटेड and our systems have not been modernized. Our crop yield is not high enough. Our farmers are still insisting on using urea in farms, whereas they need to use DAP. DAP is 10,000 rupees a bag. Urea is 2,000 rupees a bag. But urea does not give you a high yield. Our soils are not being treated accordingly. So, जब हम invest नहीं करेंगे पैसे in our crop yield, in our agriculture, innovation, तो हमारा रिज़ल्ट डिसमल होगा। रिज़ल्ट डिसमल होगा। आपने 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फूड सप्लाई करना है। Inflation is a natural consequence of that. So the problem is not at our end, the problem is at the other end. Another issue I want to highlight, which probably is true, I can say this as an economics student, we have huge demand issues. हमारे यहाँ लोग इतना खाना ज़ाया करते हैं, unnecessarily ज़ाया करते हैं, डबल कुक करते हैं। मैं नहीं मान सकता कि इंडिया में और बांग्लादेश में, और मैं गवाह हूँ कि चाइना में ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 2 बंदों की दावत है तो आप 15 डिशें बनाओ उसके अंदर। मैं नहीं मान सकता कि हमारे यहाँ जिस तरह पैकेजिंग होती है वेजिटेबल्स की, और लोग जिस अंबार से हमारे यहाँ कूड़े में फेंकते हैं खाना, बाहर के मुल्कों में आप पे जुर्माना हो जाए अगर आप इतना खाना ज़ाया करो तो। आई नो इन जर्मनी वी वर ईटिंग एंड द रेस्टोरेंट फाइंड अस क्योंकि हमारी प्लेट में खाना बच गया था। तो there's a demand issue. Just give me a second. Your last question is how the government can tackle artificial inflation, and what are the solutions and steps to control fictitious inflation. Inflation can only be controlled if there's a 3-pronged strategy, in which the first tier is the government, which I believe is doing its best, and it can further try to enhance its efforts. Of course,
Public participation is important, and we as public pressure builds on, we will continue delivering. The other two tiers are the supply side and the demand side. Suppliers, wholesalers need to be considerate towards other people. Keeping a profit is their right. Charging an abnormal profit, creating artificial shortages, that is not a right. That is a criminal offense. So supply side के ऊपर जो लोग हैं, they need to be more considerate, and they need to take this up as a philanthropic work. Ke they do their job rightly and they don't overcharge. And the third and most important step is the demand side. If there is extremely high demand for chicken, prices for chicken will go high. I remember very clearly, even when I was young, in my house, we had limits on how much we were allowed to eat. Not in terms of the quantity, but in terms of discipline. अब गर्मी का मौसम है तो अब अंडा नहीं खाना मसलन, या बच्चे हैं तो they are going to have 1 egg per day. If there's going to be a meat dish, then meat is going to be served twice or thrice a week. Now, currently, if you look around yourself, इतनी महंगाई के बावजूद, there are people who are having meat 7 days a week. Whenever we go out to eat, we have beef. Beef is not only expensive, beef is also bad for the environment. The whole world is moving towards vegetarian options, but we are at a record high consumption of chicken and meat. So why will there not be inflation then? I can just give examples of my household, and we were, mashallah, a fairly stable household. But we used to have sabzi, we still do. We have sabzi, we have dal, and then, once a week or twice a week we have meat. Is that happening around us? What is the consumption of chicken around us? What is the consumption of luxury items around us? What is the attendance at restaurants around us? So, ऐसे नहीं हो सकता कि you say कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, and at the same time your consumption is skyrocketing. So I think everybody needs to play their part, be responsible, not just towards the economy but also for your own health. We have a record high diabetes problem, and then we say that sugar is too expensive. In my household, we get 2 kilos of sugar a month, and that's all that we need. In a regular household in Pakistan, sugar consumption is up to 10 kgs a month, even more. We have cholesterol problems, we have diabetes problems, and yet we are still demanding more and more of these goods. We need to, as customers, rationalize our consumption, and only then I think we will be able to successfully control the pressures of inflation. Thank you. Anything else? नहीं, that's all. Perfect.